Establishment of a new state in the sense ଆମର already ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଅଛି ୟୁଟି ସେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କଲେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଟେରିଟୋରୀ ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୁଡ ସେଠାକୁ ଫର୍ମେସନ ହଠାତ୍ ତ କେବେ ହେଇଯିବନି ନା ରଶ୍ମିତା ଇଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବଟ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ starting from class 1 to class 10 thereafter the proceeding is established. So establishment means step by step formation. A formation in the sense newly creation. जोटा हमर रहिला आर्टिकल 3 रे गला हमर रहउची कोन की एक्चुअली बाउंड्री कोन देखला आर्टिकल 3 अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट सब आर्टिकल गुडा पढिबो ए आर्टिकल गुडा वर्ष पढा पढी कर सब प्रत्येक आर्टिकल जो व्हाट्सएप रे सेंड हेची आर्टिकल एको पूरा रिमेम्बरेंस रखिबो राइट टू दिस 21A राइट टू एजुकेशन 21A ऐसा कोई रेक्टिफाई कर दिया 21A हो बचेगा राइट टू एजुकेशन 14 लिखाई देला देखी यस सर मु भी सिंगल पता अरे को मते कहबो सांगे ना नहीं मेरे 14 में 21A तो 21A कर दे सर आओ गोटे मनी बिल फाइनेंशियल बिल आ बजट मनी बिल फाइनेंस बिल तो 3 नंबर डिफरेंस कौन 3 नंबर हां राज्य एजुकेशन बा सेटा 14 लिखाई सेटा लिखा 21A ताको टिके तळे लिखि करी छाड़ देलनी पिला मानको केମିତି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନି ଆମ ପସ୍ତ୍ରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଏଟା ପସ୍ତ୍ରୀ ତ ट्वेंटी वन ए कर दिया करेक्शन कर दिया करेक्शन कर दो ना 21A अगर शुभम 21A करेक्शन कर दे कि तुम सेंड कर दो राइट टू एजुकेशन 21A ओके स्टूडेंट्स financial bill money bill and budget bill difference between financial bill money bill and budget listen here students when we consider about budget at that time we consider about the annual financial statements केते इनकम आसिला केते एक्सपेंस है केते इन्वेस्टमेंट हैला केते रिटर्न आसिला दैट इज रिलेटेड टू बजट इनकम और एक्सपेंडिचर रो सिनेरियो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बेले हमें कंसीडर करते रिलेटिंग टू मनी बिल गोटे बिल दा मनी बिल बोली ताको डिक्लेरेशन देबे कि ना स्पीकर ऑफ लोकसभा सेटा हला मनी बिल मनी बाबद रे जते बेले हमें कोन करू कोन से गोटा इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी बाबद रे डिस्कशन करू एवं इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी रे हमर पैकेज रहिबो कोन रिलेटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट स्टेट डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट ताको हमें कंसीडर करले मनी बिल आ फाइनेंशियल बिल हमें कोन कहले जो गोटा प्रोजेक्ट एरिया रे हमें धरा जो इन्वेस्टमेंट करिबा इन्वेस्टमेंट कोन धरा जो पायल पाखरे रश्मिता पाखरे कोटी टंका अछि से कोटी टंका को से कोन करले गोटे जगह रे इन्वेस्टमेंट करले कोटी जगह रे तो इन्वेस्टमेंट करले से कोटी प्लस रिटर्न पाइबे ना तो इन्वेस्टमेंट काई करिवे सेते सेटा है जो फाइनेंस मनी व्हेन इन्वेस्टेड इज नोन एज फाइनेंस तेनो फाइनेंशियल बिल रिकरेशन हमें को प्रोजेक्ट रे को सेक्टर रे केते इन्वेस्टमेंट करिवे केते हमें रिटर्न पाइबे नेक्स्ट अच्छा हमें को जगह जाइथिले चैप्टर कहिलो पिले
We must discuss about Union Council, State Council, states. कोटा पड़ेगा आज जुडिशियरी ना कौन कोई जाय पढुले सर गवर्नर रो मिसेलानियस फंक्शन रो पढ़ावा लिमा लाइन न आज्ञा सर कोटू स्टार्ट करबा कहलु चैप्टर सर गवर्नर रो से जो मिसेलानियस फंक्शन पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर नहीं सर गवर्नर रो जो मिसेलानियस फंक्शन नहीं ना सेटा गवर्नर रो मिसलेनियस फंक्शंस लिमा से जो आर्टिकल कोटा दिया जायतिला तादरे मिस्टेक ऑफ कोटा रहि जायछि हमर राइट टू एजुकेशन होछि 21 ए आज्ञा सर देखि दिले रेक्टिफाई कर दबो 21 ए आज्ञा आज्ञा अच्छा जो हमर गवर्नर कर मिसलेनियस फंक्शंस ता जो रहिछि सेटा से कहछि पढा बोली गवर्नर गवर्नर का मिसलेनियस फंक्शन जो रहिछि हमर स्टेट एग्जीक्यूटिव ता पढिथिले फिर भी से अराइज क्वेश्चन रिलेटिंग टू हम डिस्कशन कर देके तापर अलग जो पढा होतला पढेबा स्टेट एग्जीक्यूटिव ए जो से बोधे टिके देखुछि हमर कोन कले जेना परडा बुक अछि बाबारे शुभम के देला अरे गवर्नर सर पेज नंबर 312 रे अछि 310 312 312 312 listen to me students when we focus on the miscellaneous functions of the governor 312 page 312 the miscellaneous functions of the governor Tanu. In addition to the above functions the governor also performs the following miscellaneous functions and what is the functions therein it is related to Jana and Baroda. First, he is the ex officio chancellor of all universities of the state. State ro jete universities achi tar logile chancellor. He acts as the chairman of a Red Cross society in the state. Am state ro jo Red Cross society rahibo tar se chairman rahibe. That is tankar miscellaneous function. Being the ceremonial head of the state. What is the meaning of a ceremonial head? Different type of ceremonies, particularly national ceremonies, national festivals. हम रिपब्लिक डे को कि Independence Day को देखो
Being the ceremonial head of the state, he received the guard of honor and salute on Republic Day ceremony. Republic Day ceremony जो 26 ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି contribution ରୁହେ relating to their administration functions. Being the ex officio chancellor of different university of state, governor appoints the vice chancellors of the concerned state universities and also dictates the term of their office. He also presides in the convocation ceremony of these universities and confer university degrees to successful candidates. Being the ex officio chancellor of different universities of the state different university ex officio chairman by virtue of his power, by virtue of his position. Chairman हेले आउ कोन करନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଭୋକେସନ पर्टिकुलरली हमर जो रहउची सेमिनार थर आरंभ करी बाहर स्टेट रो जो माने आउଛନ୍ତି डिग्निटरीज माने रिप्रेजेंट करूଛନ୍ତି जोटा हमें विभिन्न प्रकार अधिवेशन बोली ओडिया रे कहू कॉन्फ्रेंस और कन्वोकेशन गुलारे से कोन करନ୍ତି जो माने प्रकृति रे भलो भलो पीएचडी डीलिंग करे गले डॉक्टरेट लाभ कले ताको से गुडा कोन करନ୍ତି ना प्रोवाइड कर के ना गवर्नर सो फॉर अस द स्टेट यूनिवर्सिटीज इज फंक्शन. He receives the president as a matter of a protocol who is on a visit to the state and provides maximum hospitality to him as the state guest. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଆସିବେ particularly ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶା କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ରିକଲ୍ କରିବେ ନା ଭେଟ କରିବେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ କି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ରିସିଭ୍ କରିବେ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ତ ମାନେ ଏମିତି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଯାଆନ୍ତି ଅଲଗା ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କର একটা ବେସିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯୋଉ ବିବିଧ କ୍ଷମତା ରହିଲା ସେ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ऑनरेबल गेस्ट को से कौन करंती ता रिसीव करंती दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ रिपोर्ट. He received the annual reports of the state public service commission, also the report of the accountant general of the state, and caused them to be laid before Vidhan Sabha. Listen, amaro OPSC ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन बालीजात्रा पड़िया को गला बेल को मंगलाबाग लाइन रे सीधा स्टेडियम गला बेल को लेफ्ट साइड रे जेतले जाउथबो रास्ता रे से ऑफिस मुंडिया मारी के हां से कैरियर रो हम जीवन माने देवता सदृश ओपीएस ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तमे हमर स्टेट रो जेते रही टॉप लेवल रो जॉब होची ओएस ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओपीएस ओडिशा पुलिस सर्विस किबा हमर ओडिशा रे जो रहउची पर्टिकुलर जे माने लेक्चरशिप म्हणजे से को पाई मध्ये से कंडक्ट करते इवन केवल आर्ट्स की कम साइंस ने की कॉमर्स ने सब करते तेणु आम स्पीयर होती रिक्रुटमेंट प्रोसीजर अपॉइंटमेंट रखिए ना ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तेणु तदारख करती केते रिक्रुटमेंट पाइले जो पोस्टिंग पाइबे ताको आमु सिलेक्शन कराती कि ना ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन प्रीलिम मेन फाइनल सब इंटरव्यू जाके गला परे रिकमेंडेशन करिवे कि ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जीए डिपार्टमेंट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ वन से continuing in service टा continuing करिया पई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोन करंती इनवाइट बा ताकू फैसिलिटीज किछि दे. नेक्स्ट गोटे रहउचंती कोन कि हमर गवर्नर मध्ये पोस्टिंग रिक्रुटमेंट दियंती अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट आउ एंड कॉज देम टू बी लेड बिफोर विधानसभा आगे सब गुडा कोन बे ना फोरकास्टिंग सब गुडा जो कार्यक्रम जो जगह घटिची ताकू तदारख कला पर रिपोर्ट गुडा जायते हमर कोड की सेंसिटिव. He gives very awards to different persons for their outstanding performances in different fields. He also gives civilian awards to persons who had excelled in the field of social service, cooperative movement, sports, science and technology, literature, etc. हमर विभिन्न प्रकार अवार्ड दिया जाउची आमे जदि देखिबा हमर पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स रे जेमति हमर दिया जाउची पर्टिकुलरली स्पोर्ट में हमर बेस्ट अवार्ड होची कोन की अर्जुन अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो गुडा को मैक्सिमम द्रोणाचार्य अवार्ड ये जो अवार्ड गुडा जेमते हमर नेशनल लेवल पे अछि स्टेट लेवल पे जो अवार्ड गुडा कोन करा जाय प्रोवाइड करा जाय तारा प्रकृति रे मेन मेंटर रहउचंदी के ना गवर्नर से कोन करंती जो माने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करंती को फील्ड रे सोशल सर्विस कोऑपरेटिव मूवमेंट स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिटरेचर ये जगह जो मैंने भल भल काम कले से किसी ना किसी रिवार्ड्स दे
मिसलेनियस फंक्शन पोजीशन ऑफ गवर्नर बॉडी को जोटी जा डाउट ले पचारिबो ताले आउदिला ना सरी जाइदिला प्राय आमे ठीक गवर्नर गोटे लिंक हिसाब रे परफॉर्मेंस करन तापर पिला हमर होचनी चीफ मिनिस्टर state chief minister like the office of the prime minister at the center. The office of the chief minister is a very powerful office in a state. The chief minister is the most powerful functionary of the state government. He is the head of the state council of ministers, which is the real executive. The chief minister is the real executive head of the state. He exercises vast powers and plays a leading role in the state. देखो state chief minister कथा जदि हमें consider करिबा सेंटर रे हमर प्राइम मिनिस्टर स्टेट रे ले प्राइम मिनिस्टर का जो परफॉर्मेंस चली छी सेंटर रे स्टेट रे मध्ये चीफ मिनिस्टर से बड़ी परफॉर्मेंस करूचंती ताले हमें देखिबा चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रियल एग्जीक्यूटिव आउ ही एक्सरसाइजेस वास्ट पावर्स एंड प्लेज ए लीडिंग रोल इन द स्टेट स्टेट रे गोटे बड़ लीडिंग रोल लेथांते की Method of appointment of the chief minister. As per the constitution, the chief minister is appointed by the governor. Governor को द्वारा chief minister appointed है. But this doesn't mean that the governor is free in the appointment of the chief minister. In practice, the governor has no real choice open to him. Because after general elections to the legislative assembly, the party or coalition group which secures majority in this house elects its leader and communicates his name to the governor. The governor then formally appoints him as the chief minister and asks him to form his council of ministers. Listen, method of appointment of the chief minister. जेमती सेंटर रे आफ्टर द जनरल इलेक्शन सरी गला जे मेजॉरिटी पार्टी रो लीडर ताको कोन करा जानती न रिकमेंडेशन करा जाय छै एज प्राइम मिनिस्टर स्टेट रे सेही बड़ी जनरल इलेक्शन सरी गला हमर जनरल इलेक्शन विशेष करी स्टेट रो इलेक्शन सरला करे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन से इलेक्शन सरला परे जे मेजॉरिटी पार्टी रो लीडर थिबो चीफ मिनिस्टर हिसाब रे कंफर्मेशन आगे when no party gets a clear majority in the state legislative assembly the governor normally asks the leader of the single largest party to form the government in most of the cases however if a single party is not enjoying majority in the state legislative assembly 2 or 3 parties form a united front or coalition. This group then elects its leader and communicates his name to the governor, who then invites him to form the government. Listen. बर्तमान हमें देखिबा जे रहिबे मेजॉरिटी पार्टी रो लीडर तमे जानि थिबो 24 वर्ष शासन कले बीजेडी गवर्नमेंट नवीन बाबू ता पर गोटे ड्रास्टिक चेंज देखा दला ओडिसा रो राजनीति रे नवीन को पर आसिले मोहन तने मोहन बाबू आसिले जे पर किछि ना किछि लोक मानकर सब सुविधा असुविधा हलानी आ बहुत सुविधा मोहन बाबू कलेनी सबुठारो बड़ सुविधा हला आमे से सुविधा पाई करूना काहे कि हमको 80 वर्ष होई 3500 टका पेंशन छोट पिला माने भाबुते हॉस्टल पिला माने हमको 80 ही जाता कि हेले शीघ्र 3500 टका पान दम पॉकेट मनी दे खर्च उठी जाता मोबाइल रिचार्ज करियो घर केते मागियो मागिला माने पार्टी तेनु करी हमर 3500 टका ले केते फैसिलिटी हे जाता तेनु पिला हमें देखिबा जेते बेले वर्तमान हटात ड्रास्टिक चेंज हैला बीजेपी गवर्नमेंट रो बीजेपी रे लीडर हे गेले सुप्रीमो हेले किए सेते बेले को जणा पड़ नथिले इलेक्शन बेले जणा पड़ले कि बीजेपी रे लीडर हेबे बोली के जानि कर नथिले केते जण को ना होतिला किंतु जा हो भारत रो जणे ओडिसा रो सुजोग्य संतान मोहन चरण माझी ओडिसा रो वर्तमान मुख्यमंत्री लीडर मेजॉरिटी तांको सपोर्टर अछि से वर्तमान लीडर आ से हेले चीफ मिनिस्टर तेनु पिले हमें देखिबा जेते बेले कोन सी स्टेट रे क्लियर कट मेजॉरिटी नथिबो जेम चैम्बर सेंटर रे कोalition गवर्नमेंट स्टेट रे मध्यम सेंटी कोalition परमिशन हबो एवं सेते बेले रिकमेंडेशन देबे किए ना गवर्नर ऑफ द स्टेट नेक्स्ट In May 2014 Mr. Navin Patnaik the president of BJD got appointed as the chief minister for the 4th consecutive tenure because BJP had secured a thumping majority of Odisha Vidhan Sabha elections by capturing 117 out of 147 seats in a new assembly. New assembly रे 147 seat रू 117 seat की capture कले किए ना नवीन पटनायक गवर्नमेंट. Tenure theoretical the chief minister holds office during the pleasure of the governor. गवर्नर मध्ये सब बेले चेक करथबे गवर्नर होचंदी एजेंट ऑफ द सेंटर
से देखुथिबे स्टेट रे जो चीफ मिनिस्टर हले से चीफ मिनिस्टर प्रकृत रे मेजॉरिटी सपोर्ट अछि कि नाही, कॉन्फिडेंस मोशन ने से जीति परिबे कि नाही। मेजॉरिटी सपोर्ट जेपन थिबे कॉन्फिडेंस जते बेले पर्यंत थिबो को माने करे एमएलए माने करे चीफ मिनिस्टर को प्रति से पर्यंत कोन करथिबे चीफ मिनिस्टर एग्जिस्टिंग रहिबे। सेहि पई कोइ जे चीफ मिनिस्टर is appointed or chief minister post is under the disposal of the governor and he is actually stable so far as the disposal, I mean the pleasure of the governor is concerned. So, however, in actual practice, the chief minister remains in office so long as continues to be the leader of the majority party, the state legislative assembly. State legislative assembly, leader of the majority party shall function. The state legislative assembly can also remove him by passing a vote of no confidence against him. In this case, it is also taken to be a vote of no confidence against the entire council of ministers and it resigns. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର majority support ନ ରହିଲା, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସବୁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ରହିଛେ 4 3 7 2 9 9 ର ମେଜରିଟି ହେଲା କେତେ 5 ନା ସ୍ନେହା 9 ର ମେଜରିଟି 5 ପାଇଁ 5 ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ଭୋଟ ଅଫ नो କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆସିବ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଧରାଯାଉ 4 ଜଣ ମୋ ସପୋର୍ଟ ରେ 5 ଜଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁଝ ଭାବିକି କହିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋର କେମିତି ମେଜରିଟି ସପୋର୍ଟ ରହିଥାଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଜଣ ମୋ ସପୋର୍ଟ ରେ 4 ଜଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ କିଛି ହବନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କାମ କଲି 5 ଜାଗାରେ 6 ବି ମୋ ସପୋର୍ଟ ରେ ଆସିପାରେ ଆଉ ମୁଁ ଖରାପ କାମ କଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 2-3 ମୋ ସପୋର୍ଟ ଆସେ ମୁଁ ବିଦା ହେବି ଆଉ। भुवनेश्वर जो मुझे क्वार्टर मिली निवास से निवास विदा ही गाँव को टंकिया चाउल रोषे कर तेणु मुख्यमंत्री कौन करेंगे निजर परफॉर्मेंस करुवे निजर जेपर्यंत कौन करथिबे ना गाइडलाइन भीतर रहिथिबे से पर्यंत कौन करथिबे के भी टिके इंटरफेयर करिवर ना जेतेबेले टिके निजको निज निजर परफॉर्मेंस बा कॉन्स्टिट्यूशन रा जो रूलेशन रहिछि ताको कौन कले ना सुपरसेट कले सेतेबेले ताका अगेंस्ट रे किछि ना किछि आसी पारे। सबुठरो बड़ जिनिस होउछि जे पर्यंत कॉन्फिडेंस मोशन ने विन करछे माने तम पाखरे आ कोन प्रकार प्रॉब्लम तापर देखिबा पिले powers and functions of the chief minister. Formation of the council of ministers, the chief minister has the power of forming a ministry of his choice. The constitution gives him the freedom to select his ministers. He is quite free in choice of his ministers, particularly in the case of his party is having a clear majority in the legislative assembly. He can appoint any member or any a non-member as a minister and allocate him any portfolio. The strength in the state council of ministers cannot be more than 15% of the total membership of the state legislative assembly. Chief minister को साथे साथे सब एमएलए चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले तेणु जेपर्यंत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सपोर्ट थिबो सेपर्यंत चीफ मिनिस्टर पर मध्ये किछि नाही स्टेबल परफॉर्मेंस चली दिबो एवं जेतिकी टोटल हमर रहिबो कोन ना मेंबरशिप तार 15% कंसीडर करिबे कोउदरे ना विशेष करी हमने भी काले इटा डिस्कशन करिथिले एके टिके लिखि दियो लास्ट लाइन देखि दियो द स्ट्रेंथ इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी मोर देन 15% of the total membership of the state legislative assembly. State legislative assembly रो membership है केते 147 ताले आमे एडी देखिबा जे हमर जोटा रहउथिबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टा कोन रहइबो टोटल तार रहइबो कोन कि 15% 100 रे 15 हेले आमे जे देखिबा 147 हार्डली आउ 7 जण खडे 22 ହେଲା। So students, next distribution and change of a portfolio. Portfolio in the sense हमर ओडिया रहउछि विभाग बंटन डिपार्टमेंट्स के को विभाग रे रहिबो देखो after the appointment of a ministers the next important function of the chief minister is the distribution of portfolios among them. He decides who will be a cabinet minister or minister of state. He allocates the department to ministers. The chief minister also has the power to change the department of any minister. He can call upon any minister to quit, then has to submit his resignation. Chief minister कौन करिवे
जहाँ को जो विभाग दे पारिबे धरा जाओ वर्षा टिके चीफ मिनिस्टर को पाखापाखि लोक वर्षा को मिल गला कौन कि फाइनेंस आमर सेंटर रे जेमि पोर्टफोलियो स्टेट रे से भली पोर्टफोलियो चली छि बट गोटे जिनिस होउची कोन ना आमर जेते बेले स्टेट रे हमें पोर्टफोलियो देई थाउ पर्टिकुलरली बा सेंटर रे पोर्टफोलियो देई थाउ आमे देखू पॉलिटिकल पार्टी रे को मानकर सीनियर मोस्ट अछंती एवं साधारणतः टिके पार्टी रो डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूशन जो माने टिके एक्टिव मेंबर अटैच्ड चीफ मिनिस्टर के सहित से माने को टिके टिके भलो भलो रिवार्डिंग पोस्ट गुडा मिली पाए भलो भलो टिके पोस्ट गुडा मिले जोटा को कैबिनेट सीट पर देन हाँ आउ गोटे भी रही पिले लास्ट पिला हमर द चीफ मिनिस्टर आल्सो हैज द पावर टू चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ एनी मिनिस्टर दरा जो मु कहबी हमर साधारणतः स्मार्ट डिपार्टमेंट हो एजुकेशन डिपार्टमेंट काहे कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट ता सब बेले पेपर रे आसे भारत रे कोन ओडिसा रे कोन परीक्षा पूर्व पेपर लीक हुए तेणु एजुकेशन मिनिस्टर मैंने टीवी को पड़े आसती हसिकी पान खाई गपी दिखाते आमको खुशी लगे किए ना एजुकेशन मिनिस्टर आमर सब लीक सेंटर एनईटी पेपर लीक है तुम देखा आउ 1.5 मास पर +2 परीक्षा आरंभ हो मैट्रिक परीक्षा आरंभ हो कौटी तलिया अंचल जो बोर्ड गाड़ी जापरबनी से राति आलमीरा खोलिक छुआ को क्वेश्चन पढ़ी पढ़ी दियो ता बाबद पैसा पत्र कारबार चलती रूल रेगुलेशन सब जगह दिए तेणु आम बेले बेले देखू कौन कि किए को विभाग बंटन साधारण इंपोर्टाट पोजिशन गुड़ाक इंपोर्टाट लोक मान दि जाए कौ मैंने जो मैंने चीफ मिनिस्टर सहित अटैच्ड पुणी पिले काउंसिल ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द चीफ मिनिस्टर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट he prepares the agenda of his meetings communicates it to the ministers and then presides over them he can summon such meetings at any time as chairman of the cabinet he plays a key role in the deliberation held and the decisions taken council of minister से होचंती चेयरमैन किए चीफ मिनिस्टर तेणु कौन सी प्रकार डिबेट है डिस्कशन चलला डेलिबरेशन चलला कहा बाबद रे को बाबद रे केमिति फाइनलाइज करा जिवो एवं तार डिसीजन किभली आसिला दरकार पड़े डकई पारिबे समन करि पारिबे चीफ मिनिस्टर फॉर द वेलबीइंग ऑफ द स्टेट फॉर द वेलबीइंग ऑफ द पीपल फॉर द वेलबीइंग ऑफ द पॉलिटिकल जो चीफ मिनिस्टर जते एक्टिव रहइबो सेते से कोन करबो ना प्रकृति रे परफॉर्मेंस तो भलो होइपारो सबुठार बड़ जिंस होउची तमे कहिलो हमर तमे देखिला भितरे हम ओडिसा रे चीफ मिनिस्टर सब अछंती स्नेहासिस अकॉर्डिंग टू योर व्यू हम ओडिसा रे चीफ मिनिस्टर माने एक्टिव केते बेले बेसी रिनाउंड होंती तमे छोटो पिला हिसाब रे को इलेक्शन टाइम रे टी बेसी एक्टिव हे जाय ताको हाथ की गोड़ के देखि न तबो सेतळु हाथ जोड़ीबा फोटो देखि बहुत माने भक्ति तांकर हां तेणु पिले हमर हम ओडिसा रे जो राजनीति होची भारत रो जो राजनीति होची आ गोटे बड़ जिंस होची मन रख हम एमएलए एमपी मानकर ना सेठी काम करचंदी को माने ब्यूरोक्रेट्स हैला कि तेणु 24 वर्ष काल जो नवीन बाबू चलीला ए जो लास्ट केते दिन चलीला 3-4 वर्ष ओडिसा इज पांड्यान पांड्यान इज ओडिसा तमे को के नवीन पटनायक फोटो मु तो देखि नथिली नवीन कोटो फोटो कोटो किछि कहू ये कोउठ हेले नूर नूर थुर थुर करी जाउचंदी रथयात्रा ठार आरंभ करी सेतबे जोडी देखिबो बीके पांड्यान एमिति ब्यूरोक्रेट्स थिले से समस्त को चेक करके रखी दिले आईपीएस लेवल रे तांकर सेंट्रल लेवल एमिति हाथ थिला ताको भलिया गोटे दक्ष प्रशासक मिलबा ओडिसा इतिहास रे आ नाही केते एक्टिव मेंबर्स केते एक्टिव थिले ब्यूरोक्रेट्स तेणु हमर खाली एमएलए एमपी एमाने ना को मात्र सेक्रेटेरिएट रे सब काम होउची ए एमएलए एमपी की से माने 50 नदी आईएस में ये जो स्ट्रेटजी करछन्ती डिक्लेयर करछन्ती काई एते दिन हेलानी गवर्नमेंट एते दिन हेलानी गवर्नमेंट डिक्लेयर करथिला सब गुडा करियो काई 7-8 मास हेलानी बीजेपी गवर्नमेंट काई एबे गोटा गोटा भूल करछि तार कारण कोन ये फाइल की खोली ना दिए जाके सेक्रेटेरिएट आईएस माने को पचारु नाथि काई ना सेते बेले जो 24 वर्ष एमिति घसडा हला से गोटे फैमिली मेंबर भलिया चलिले रिलेटिंग फैमिली फैमिली रो घर रो गाड़ी नेले के पांड्या गोटे रहला के सानो भाई के भौणी केम सब गोडा चलिले सब डिपार्टमेंट को कवर कर गले ये माने सांको प्रोसीडिंग को चेंज करिग्री इबे आसिलाल के 7 मास भीतर बोधे सेक्रेटरीट लेवल रे जो आईएस मैन अछंती ये एमएलए कथा को सुनी नथिबे अरे आईएस माने एते टैलेंटेड लोक आ सबु ठार बीजेपी रे हमर जो जाईचंती एमएलए माने ताको नॉलेज तुम कहिबा असंभव मधु बाबू केंद्र रे कहउछंती उत्कल
ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆସିଥାଏ ଆମର ଆମେ ଲେଖିବାରେ ବେଳେ ବେଳେ ହଉ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ରେ କିଛି ଭୁଲ ହବାଟା ସାଧାରଣ ଟିକେ ରେୟାର କେସ୍। ତେଣୁ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିବ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ନୋବେଲ पर्सनालिटी ଅଛନ୍ତି, ऑटोमेटिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेन लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The chief minister is the main link between the governor and the ministers. It is his duty to communicate to the governor all the decisions of the cabinet. He is also required to furnish such information about administration and legislative proposals as the governor may call. Governor main link between the governor and the council of ministers. Council of minister रे कौन परफॉर्मेंस करागला से रिपोर्ट को कौन करिवे स्वप करिवे काहे को गवर्नर एवं गवर्नर कौन करिवे फॉर्टनाइटली रिपोर्ट देबे काहे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट को जोटा दिया गला सेठी देन एंड देयर कौन करा जीवो प्रेसिडेंट मैक्सिमम टाइम कौन करंती सौजन्यमूलक साक्षात करंती काहे को प्रधानमंत्री की आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेठी मध्य सेटा चलिबो कौन की डिस्कशन जोटा कैबिनेट कर सेटा डिस्कशन चलिबो। तने गोटे प्रकार आमे कहबा नेसेसरी चेक आउ बैलेंस भीतर रहिछि कहा कहा भीतर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी कि एटा हला कोन कि अमेरिका रो प्रिंसिपल एवं एटा को हमें कहले स्नेसिस कोन थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। केई का क्षमता हस्तक्षेप करबानी लंबोदर हला हमर जुडिशियरी शुभम हला हमर एग्जीक्यूटिव स्नेसिस हला हमर लेजिस्लेचर ताकू स्पीयर रहिछि समस्त निज निजर काम करले से ता काम रे इंटरफेयर करबानी कि ये ता काम रे इंटरफेयर करबानी एटा को जे सेपरेशन ऑफ पावर। एटा को अमेरिका रो फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू देइथिले थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पॉलिटिकल थिंकर बा फिलोसोफर। अब आमे पुनी जदी कहिबा हम इंडिया रे विशेष करी बरोड करचे मैक्सिमम टाइम तमे देखिबो सेंटर अछंती स्टेट अछंती लोकल अछंती बा सेंटर अछंती स्टेट अछंती कंकरेंट अछंती हमर सब बेले डोमिनेटिंग की सेंटर। ये कांसेप्ट हमें कोडू बरोड करी आइले ग्रेट ब्रिटेन रे कोन रहिछि एटा होछि यूनिटरी सिस्टम ताकर सब बेले पई सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग सब गुडा पावर कोन होछि सेंट्रलाइज हेकि रहिछि सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ रे टू सेंटर अबाउट द स्टेट गुडा को बंटन कर। Next students, role as the chief coordinator. The chief minister has the prime responsibility of coordinating the work of all departments of the government. He has to see that all the ministers may work as a team and help each other. He resolves the conflict or deadlocks between any two or more departments. His decision supersede the decision of each ministers. बेले बेले देखा जाए हमर पार्टी रो लीडर हेले चीफ मिनिस्टर सक्सेस पार्टी रो सक्सेस चीफ मिनिस्टर सक्सेस आउ जेते बेले चीफ मिनिस्टर को सक्सेस हुए सेते बेले होची स्टेट रो सक्सेस। हमर विशेष करी हॉकी मैच केतेटा नवीन बाबू को समय रे इंटरनेशनल फेम पई आसीची कार्यक्रम ओडिसा रे तेणु बेस्ट चीफ मिनिस्टर अवार्ड मध्ये मिलिला नवीन बाबू सी जहाँ भी करंतु पिले जेतेबेले नवीन बाबू गोटे अवार्ड पाइले तमे जानुथिबो तांको बापा बिजू पटनायक पाइले भूमिपुत्र अवार्ड कोडु ना इंडोनेशिया गवर्नमेंट तेणु भारत वर्ष रे कई जण लीडर अछंती कई जण एमिति कमांडिंग अथॉरिटी बोली जानिथिले इंडोनेशिया गवर्नमेंट काकू ना बिजू पटनायक जेतेबेले बिजू पटनायक पाइले माने एटा भारत रो क्रेडिट ओडिसा रो क्रेडिट कटक रो क्रेडिट तमरो क्रेडिट हमरो क्रेडिट समस्त रो क्रेडिट। तेणु चीफ मिनिस्टर जेतेबेले भलो परफॉर्मेंस करले दैट इज the performance of the state कहले अत्युत्तम होगा। तेणु जे कोनोसी प्रकार डिपार्टमेंटल कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करिबारे रोल थिला चीफ मिनिस्टर को मैक्सिमम रोल एज द लीडर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर not only of his party but also of the legislative assembly. His status as the leader of the majority party bestowed upon him this role. In this capacity he has to lead the role in the right direction. He acts as the spokesman of the government and makes all important announcements of his government. He is the chief defender of the policies of the government. हमर विभिन्न प्रकार रूल रेगुलेशन प्रत्येक स्टेट पई होछ देखिथिबो बेले एबे गोटे रूल आसीची बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हैला परे जो जगह रे पुलिस स्टेशन अछि
जो जगह पुलिस स्टेशन अच्छी से पुलिस स्टेशन गुड़ा जदि टिके ट्रेडिशनल हे गला आ भलो नाही पुराना कालिया मॉडल अछि कंजेस्टेड अछि फेमिजेस गाड़ी मोटर रही पारुनी लोक मानकर विशेष करी जो माने जाउचंती एफआईआर रिपोर्ट दबा पई सेठी प्रॉब्लम आसुची नुवा नुवा पुलिस स्टेशन सब एवं गाइडलाइन आसी जेतिला ए गवर्नमेंट देइतिले जे 15 जनवरी भितर सब जगह रे जो टिके प्रॉब्लम रही सेठी गोटे गोटे नुवा पुलिस स्टेशन करा एवं डिक्लेरेशन करा ही गला आ खूब शीघ्र सब जगह रे कोन कले विशेष करी हमर इनॉग्रेशन रे फंक्शन करिवे आइदर हमर इंस्पेक्टर जनरल हुन हमर कमिश्नर डीसीपी साहेब हुन सेटा कोन करे ना इनॉग्रेशन करिवे तेनु एटा गाइडलाइन थिला तेनु गाइड